या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत बेन्स होम स्टुडिओ, अ कम्प्लीट सोल्युशन फॉर युअर फर्निशिंग नीड्स. आजची स्त्री कुठल्याच क्षेत्रात मागे नाही. पूर्वीच्या काळी नोकरी करणारी स्त्री म्हणजे सहसा शैक्षणिक क्षेत्रात म्हणजे शिक्षिका असलेली. आता परिस्थिती बरीच बदलली आहे. अगदी चालक वाहक महिला ते नासामध्ये कार्यरत महिला शास्त्रज्ञ अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये महिला उल्लेखनीय कामगिरी करताना आपल्याला दिसतात. नमस्कार, मी धनश्री मणेरीकर. गोवन वार्ता लाईव्हच्या दुर्गे दुर्गट भारी या विशेष कार्यक्रमात तुमचं स्वागत. समाज माध्यम अर्थात सोशल मीडिया हे जग आता काही आपल्याला नवं राहिलेलं नाही. व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हे तर लोकप्रिय आहेतच. त्यातच ट्विटर, स्नॅपचॅट, लिंक्डइन ही माध्यमं देखील अनेक जण वापरतात. काही जण निव्वळ वेळ घालवण्यासाठी तर काही जण व्यावसायिक कारणांसाठी या समाज माध्यमांवर असतात. आजची आपली पहिली पाहुणी ही याच सोशल मीडिया जगतात वावरते. सोशल मीडिया मॅनेजर म्हणून ती स्वतःचा व्यवसाय करण्यासोबतच इतरांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी मदत करते. आजची आपली दुसरी पाहुणी आली आहे PR क्षेत्रातून. जगातील जवळजवळ सर्वच मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी धडपडत आहेत. या माध्यमातून निर्माण होणारी विश्वासार्हता आणि भावनिक स्थान त्या ब्रँडला फार खोलवर लोकांच्या मनात रुजवतं. लोकांच्या मनात स्थान प्राप्त करण्याच्या या स्पर्धेत प्रत्येकाला प्रभावी जनसंपर्क आणि त्यासाठी PR क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीची गरज मोठ्या प्रमाणात जाणवते. आज विविध कंपन्या, संस्था आणि सरकारी यंत्रणेत सातत्यानं PR लोकांची मागणी वाढतीये. हीच गोष्ट ओळखून आपली ही दुसरी पाहुणी तिच्या PR एजन्सीच्या माध्यमातून पुढे चालली आहे. तर आज आपल्या स्टुडिओत उपस्थित आहेत सोशल मीडिया मॅनेजर रेहमत शेख आणि PR क्षेत्रातील निकिता चोडणकर धुरी. रेहमत आणि निकिता, गोवन वार्ता लाईव्हच्या या स्टुडिओमध्ये दोघींचं स्वागत. तर पहिला प्रश्न रेहमत तुझ्यासाठी, तू ज्या क्षेत्रातून पुढे चालली आहे ॲज अ सोशल मीडिया मॅनेजर, हे थोडंसं हटके आणि वेगळं क्षेत्र आहे. म्हणजे आता हे उदयाला येतंय. तर आम्हाला सांग नक्की सोशल मीडिया मॅनेजर म्हणजे नक्की तू काय करतेस? तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है अभी फ़िलहाल के लिए इट इज़ अ वेरी बडिंग टॉपिक, करेक्ट. बहुत सारे जॉब सेक्टर्स में भी इफ़ यू सी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज़्यादा है, राइट. सोशल मीडिया मैनेजमेंट सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ, ये इंसान सिर्फ पोस्ट करेगी और डिज़ाइन करेगी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ. दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ द पीपल राइट नाउ. बट एक्चुअली में सोशल मीडिया मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, जॉब होता है, इट इज़ 24/7, करेक्ट. यू हैव टू थिंक, यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव, बार यू हैव टू कम अप विद डिफरेंट थिंग्स. तो सोशल मीडिया मैनेजर बेसिकली क्या करता है, आपका बिजनेस जो है, जो ब्रांड जो है, उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लाता है. कुछ सालों पहले सोशल मीडिया क्यों यूज़ किया जाता था, इट वाज मैं मेरी फ्रेंड से बात करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, यू नो, लेकिन उसका कांटेक्ट नंबर नहीं है, उसे कहाँ से ढूंढूँ मैं. तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे सब लोग साथ में आ जाते थे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते थे. सो एट दैट टाइम इट वाज अ सोशल प्लेटफॉर्म, करेक्ट. इट वाज अ यू कैन से अ कम्युनिटी जहाँ पे आप सब न्यू लोगों के साथ मिलते हो, बात करते हो. बट कोविड के वजह से सोशल मीडिया का गेम टोटली चेंज हो गया है, राइट. हर एक दिन सुनने में आता था कि इसने बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है, यू नो, ये रील्स बनवाती है, ये कुछ अपना स्किल्स दिखाती है. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म हो गया फॉर पीपल टू शोकेस देयर टैलेंट. और जब वो टैलेंट दिखना स्टार्ट हुआ, तब कोविड के टाइम पे लाइक यू ऑल नो कि लॉकडाउन की वजह से सब घर पे थे एंड खुद के बारे में या फिर यू नो लाइफ में और कुछ था ही नहीं, सिर्फ इंटरनेट, सोशल मीडिया और फ़ोन. तो जो भी है उसी 3 के अराउंड घूमती थी सबकी लाइफ. और लोगों ने आई कैन से कि सोशल मीडिया का बेस्ट यूज़ किया है ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स. और इन माई 3rd ईयर जब मैं चोगलेज में पढ़ती थी, तब मैंने एक रिसर्च किया था. मेरा पेपर वॉज बेस्ड ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग्स्ट यूथ ड्यूरिंग कोविड. तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने लोगों को यू नो उनका स्किल था उनमें, यू नो. और सोशल कोविड के टाइम पे दैट इज़ व्हेन दे स्टार्टेड यू नो टू कम ऑनलाइन, टू शोकेस, टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस. और तब से सोशल मीडिया जो है, जो प्लेटफॉर्म है,
वो कम्प्लीटली चेंज हो गया टू अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म. ओके, वेंडर्स से लेके बिग कंपनीज, सब ब्रांड्स, दे यूज टू पोर्ट्रे देमसेल्फ ऑन सोशल मीडिया. और तब से सोशल मीडिया बिकम्स योर आइडेंटिटी, योर ब्रांड्स पर्सनैलिटी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. एंड एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, I have started it in 2020. That was also a COVID time. So that was my skill that I used. And बचपन से I have been a person जो creative हो, जिसको सब try करने की curiosity है, One thing I would like to say is कि मैं same चीज़ करके bore हो जाती हूँ. Okay, so that was, I turned it into my plus point. And social media manager एक ऐसा role है, responsibility है, जहाँ पे you have to keep innovating, changing every day. एवरी आवर ऑफ द डे, क्योंकि एक ट्रेंड आ जाता है, दूसरा ट्रेंड आ जाता है, तीसरा, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी ऑल्सो. सो व्हेन आई यूज टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, my friends used to love it. Arey, wow, this is so catchy, this is so creative, how did you think about it? So I used that pinch as to change it into my hobby, जो मैं करना चाहती हूँ. And I started in 2020. तब to be very honest, मेरे पास सिर्फ 2 clients थे. I just started with 2. But at that time, I have learned a lot. I used to learn, experiment, उससे learn. So 1-2 years मेरा learning process में ही बहुत कुछ गया है. So social media बोलते हैं कि easy है, but trust me, it is not. It is not. You are on your toes. You're on your phones most of the times, you can say. निकिता, तू ज्या क्षेत्रात काम करतेस, PR क्षेत्र, ते सुद्धा हटके आहे, वेगळं आहे आणि आता त्याविषयी लोकांना माहिती होऊ लागली आहे. करेक्ट. तर तू तुझ्या जॉब विषयी काय सांगशील? ओके, सो PR जसं तू म्हटलंयस, ते खूप युनिक फील्ड असा. 90% लोकांक अजूनही खबर ना वॉट इज PR. ॲक्च्युली PR स्टार्ट जावन खूप वर्सां जाली, बट अजूनही लायक दोज हू आर इन द मिडिया फील्ड, दे नो हू इज अ PR and what is the role of a PR. But if you ask a common man, they don't know what is PR. Okay, they try to relate to different things, but they don't know it's how important it is in day-to-day life. इवन माय पेरेंट्स, तांकां आतां पर्यंत खबर नाशिल्लें की हांव कितें करता, PR म्हणजे तूं एक्झॅक्टली कितें करता. सो सगळ्यांक दिसता फिल्ड्स दिसता, डॉक्टर्स दिसता, इंजिनियर दिसता, वेरियस फिल्ड्स, कॉमन फिल्ड्स दिसता, पूण PR एक अशी फील्ड आसा जी खूब युनीक आसा आनी तातूंत तूं खूब शायन जावं शकता. आनी हांवें केन्नाच अशें चिंतूं नाशिल्लें की हांव ह्या फिल्डान वतलें आनी आय वील टेक अप अ करियर इन दीस फील्ड. सो PR इज जस्ट बेसिकली अ कम्युनिकेशन थ्रू. जशें आपले ब्रँड आसा, खंयचेय ब्रँड्स आसा, इतले बिजनसीस स्टार्ट जाला, लोक खूब कितें न्यू स्टार्ट करीत आसता. सो आय एम एक्चुअली द कम्युनिकेटर बिटवीन the businessman and the customer or your audience. So basically everybody wants to communicate their message, कितें awareness आसा, कितें promote करपाक जाय. So how do they do that? They do it through the PR, they do it through me. So I am basically the communicator who helps various customers, organizations, brands to pass on their information or promote themselves through the different mediums. Okay, so the mediums which usually I focus is all traditional media. म्हणजे तुमचे न्यूजपेपर्स झाले, मॅगझिन्स झाले, और योर टेलिव्हिजन झाले. सो हे मिडियम्स हांव यूज करता म्हज्या कस्टमर्सांक, म्हजे ब्रँड्स, ऑर्गनायझेशन्साक हेल्प करपा, प्रमोट करपा. आता जसं तू सांगितलं सोशल मीडिया विषयी, आता ते जस्ट टाइमपास किंवा एंटरटेनमेंट यापुरतंच राहिलेलं नाही, तर त्याच्यातून व्यवसायही होऊ शकतो. तर हे एक नवीन काय म्हणतात ते करिअर म्हणूया आपण, हे आता येतंय. तर या क्षेत्रात येण्यासाठी, इथे जम बसवण्यासाठी काय एखाद्याकडे काय क्वालिटीज असणं अपेक्षित आहे? तो qualities, when I talk about qualities for a social media manager, there are the 3 main qualities that I would like to highlight. पहला तो curiosity. It is very very important for a person to be curious, ताकि वो उस पर रिसर्च करे, जाने उस बारे में. It can be any topic, it can be any field. Curiosity is ऐसा ही नहीं है कि सोशल मीडिया मैनेजर को ही चाहिए. इट्स अ स्किल जो हर एक वर्किंग प्रोफेशनल्स है, दे ऑल नीड क्यूरियोसिटी. क्योंकि जितना आप जानना चाहोगे, वो जो जानने की इच्छा है, उसके हिसाब से ही यू विल
put your ideas, put your work into that. So curiosity is one thing. Second is patience. क्योंकि सोशल मीडिया, जब आप यू आर वर्किंग विद सोशल मीडिया, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ बात की एंड एक चीज़ उनका क्वेश्चन आता है मुझको एवरी टाइम, कितना टाइम लगेगा? तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि नो मैम 3-4 months मिनिमम चाहिए फॉर योर थिंग टू कम. नो, कैन इट बी इन 1 month? Can we all do it fast? So we all want everything so quick, which is not, it doesn't happen. Because everything takes time, everything slowly. There is a process, there is an organic process. That is what I do. My main thing is I grow businesses organically. सो तुला हे कन्व्हिन्स करणं क्लायंट्सना खूप मेजर तुझ्या समोर एक आव्हान असेल. Yes, a big problem you can say a challenge. I won't call it a problem, a challenge. To put it in their mind कि it takes time for things to happen. So patience for you also, क्योंकि you have to deal with the clients, क्योंकि उनके side से they want results and from your side you have to give that results, correct? So patience दोनों side से equally होना चाहिए. और third thing I would like to say is creativity is very important for a social media manager, क्योंकि आप आज के ज़माने में, आज के टाइम में आप ऐसी कुछ चीज़ यूज़ नहीं कर सकते जो 1920s 1930s में यूज़ की जाती थी. ट्रेडिशनल मेथड्स आर कॉल्ड ट्रेडिशनल बिकॉज they are traditional, but now things are changing, times are changing. You have to be innovative in every step that you take. So creativity is a must for a social media manager. निकिता, तू काय सांगशील? मला असं वाटतं मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट आय रिक्वायर इन माय फील्ड असं ते कम्युनिकेशन स्किल्स. If you don't have that communication skills, I think nobody can be in this business. So the communication skills असायला खूप important आहे. And secondly, your friendly nature. I'm a very friendly person. I talk to people. I like to talk to people. माझे खूप friends असा. I'm not an introvert. You cannot afford to be an introvert if you want to be a PR professional. So these are the two most important things. If you are very rude, or if you are not polite, or if you're a little introvert, you don't want to communicate, then it will get really difficult. I feel my funda to be a successful PR professional is my gesture towards my clients, the media people, and that is what has kept me on high level till now. आता जसं मी सुरुवातीला म्हटलं त्याप्रमाणे तुम्हा दोघींचंही जे फील्ड आहे ते युनिक आहे, वेगळं आहे. मग अशा वेळी जेव्हा तुम्ही लोकांना भेटता, तुम्ही दोघीही लोकांना भेटत असता, तुमच्या जॉबचा तो एक पार्ट आहे. अशा वेळी जेव्हा तुम्ही लोकांना भेटता, जेव्हा तुम्ही त्यांना तुमच्या कामाविषयी सांगता, मग ते बाहेर असू दे किंवा फॅमिली सर्कलमध्ये असू दे, फ्रेंड सर्कलमध्ये असू दे, कामाविषयी सांगता तेव्हा लोकांची रिएक्शन काय असते? जेव्हा रेहमत तू सांगतेस मी सोशल मीडिया मॅनेजर आहे, तेव्हा लोक काय कमेंट, काय प्रतिक्रिया देतात? ओके, आई विल स्टार्ट विथ पेरेंट्स फर्स्ट, क्योंकि बात घर से ही तो शुरू होती है. तो जब मैंने बचपन से ही आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने कमाना स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 18. आई वॉज इन माई 12th स्टैंडर्ड. मैं ट्यूशन्स लेती थी और उसका जो रिव्यू था स्टूडेंट्स का, उनका परफॉर्मेंस वाज वेरी नाइस. तो मेरी मम्मी ने देखा और बोला कि हाँ तो टीचर बन ले, सेट है लाइफ, हाफ डे काम करेगी, शाम को सोएगी, एंजॉय करेगी, लाइफ सेट है, एक्सप्लेन कर देगी सब कुछ. तो आई सेड ओके. और फिर आई गॉट इनटू मास्क मेकिंग, स्टिचिंग. तो ड्यूरिंग कोविड मैं मास्क बना के आई यूज्ड टू हैव माई मास्क का बिजनेस ऑल्सो. तो मम्मी ने बोला ठीक है तो स्टिचिंग में चली जा, घर पे बैठे आराम से यू कैन डू इट. फिर जब मैंने स्टार्ट किया 2020 में, और तब मैंने किसी को बताया नहीं था, इट वॉज लाइक अ सीक्रेट, मैं कर रही थी बस. और तब तक मेरे पेरेंट्स ने इतना सुन चुके थे मेरे बारे में कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, क्योंकि आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स. इंटर्नशिप बोल सकते हैं ना कि इन अ स्टडी पीरियड ऑफ 15 years मेरा 5-6 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस है. इतना इंटर्नशिप्स, इतना वर्क आई हैव सीन ऑन द फील्ड कि हाउ इट इज़. तो जब मैंने मम्मी पापा को बोला कि मैं क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ, उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, कितना करेगी तू, क्या करेगी तू, इतना सब कैसे करेगी तू एक डिसाइड कर ले. मैंने बोला आई वॉन्ट टू गेट इन टू दिस, क्योंकि ऐसा पेरेंट्स का है कि फ्रॉम द डे 1 जो आप सोच रहे हो वही आपको कंटिन्यू करना है.
दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर, क्योंकि उनको भी वही बताया गया था ना, आप अभी टीचर का कर रहे हो तो टीचर का ही करते जाओ, यू कांट टेक लेफ्ट, यू कांट टेक राइट, करेक्ट. तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मेरे को ये करना है, आई हैव इंटरेस्ट इन दिस, एंड दिस इज़ वॉट आई टेल ऑल माई फ्रेंड्स ऑल्सो, मेरी फैमिली को भी और मेरे कजन्स को भी, कीप ट्राइंग, वॉट इज़ देयर टू ट्राई, क्योंकि देर इज़ नो फिक्स एज लिमिट कि आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो या इसी टाइम से स्टार्ट कर सकते हो. तो माई पेरेंट्स आर लाइक ओके, तुझे जो करना है कर ले, यू नो, बट दे वर वेरी सपोर्टिव इन ऑल दैट आई हैव डन, क्योंकि उनको पता है कि जो भी मैं करूँगी इट इज़ लाइक यू नो, क्योंकि मुझे करना है. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फोर्सफुली, लाइफ में आई हैव नॉट डन एनीथिंग जो मुझ पर फोर्स किया गया है. सो दे ट्रस्ट इन मी एंड वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द सपोर्ट साइड. कुछ भी बोल सकते हो ना, जितना मेरा सोशल मीडिया मैनेजमेंट का स्किल्स है उतना कम मेरा किचन स्किल्स है, बिकॉज दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी. बोलते थे काम कर, तू कर अपना, तेरा हो गया ना. बट देर आर टाइम्स जहाँ पे मुझे उनको ना बोलना पड़ा, यू नो, फैमिली फंक्शंस रहा या फिर आई हैव टू गो समवेयर, लेकिन मेरे मीटिंग्स पेंडिंग थे. तो देर आर टाइम्स जब मुझे उनको ना कहना पड़ा. व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड्स, यू नो, फ्रेंड्स और मेरे जूनियर्स वगैरह, तो दे जब सोशल मीडिया मैनेजमेंट सुनते थे तो वो पूछते थे मुझको, अच्छा आगे जाके क्या बनोगे. यू नो, उनका था कि ये अभी के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाद में करियर मतलब क्या, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कुछ फील्ड होना चाहिए जो वो सुन सके. तो आगे जाके क्या, आई सेड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. ये आगे जाके ऑल्सो आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस. तो पीपल कंसिडर ऐसे जॉब्स एज अ पार्ट टाइम जॉब्स या फिर एज अ शॉर्ट टर्म जॉब्स बोल सकते हो आप उसको. तो एंड दे ऑल्सो टोल्ड मी कि दे गेट इंस्पायर्ड, विच इज़ अ वेरी यू नो प्राउड फीलिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे से 1 साल छोटा, 2 साल छोटा, मेरे से 2 साल बड़े, 3 साल बड़े, दे आर लाइक वी गेट इंस्पायर्ड, क्योंकि एट अ यंग एज यू आर स्टडिंग, यू आर वर्किंग, you have your own agency, you are working with international clients, state level clients, national level clients. How do you manage all this? तेरे पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे. It is all the view की how you use your 24 घंटे and how much I use. निकिता, तू मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तुला आई वडिलांनाच तुला एक्सप्लेन करावं लागतं की तू नक्की काय करतेस. मग अशा वेळी बाहेर जेव्हा पडतेस किंवा फॅमिली फंक्शन्स मध्ये जाते तेव्हा काय प्रतिक्रिया असतात लोकांची? मी ॲक्च्युली हांवें ग्रॅज्युएशन मास कम्युनिकेशनानूच केलां प्लस मास्टर्स मास कम्युनिकेशन केलां. सो म्हाका खूब अशें डिफिकल्ट जावना एक्सप्लेन करपाक लोकांक की आय हॅव टेकन अ डिफरंट फील्ड ऑल टुगेदर, बिकॉज खूब जाणांच्या आयुश्यान अशें जाता की दे स्टडी समथींग एंड दे डू समथींग एल्स. एटलीस्ट म्हाज्या बाबतींत तशें जावना. आय वॉज व्हेरी फर्म रायट फ्रॉम माय 12th स्टँडर्ड वॉट आय वॉन्ट टू डू. So after I did my graduation, I did my masters in mass communication. So they knew कि हे कितें तरी related to mass communication करता, कितें related to media करता. So media म्हटलें की तांकां फक्त दिसता journalism, नाजाल्यार तांकां अशें TV production, films, photography, graphic designing हेच दिसता. बट तातूंत एक इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आसा हो PR, तो एक्चुअली कोणाकूच खबर ना, तांकांय खबर ना. पूण जशें आतां प्रोग्रेस करपाक लागला, जशें तांकां दिसपाक लागलां म्हजें काम, तेन्ना तांकां आतां म्हज्या फॅमिली फ्रेंड्सांक सगळ्यांक कळपाक लागलां की PR इज अ पार्ट ऑफ मिडिया, इट्स अ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड दिस इज जें कितें तें शिकलां तातूंतूच तें ग्रो जाता. सो हें कळपाक तांकां खूब डिफिकल्ट जालें, कित्याक स्टार्टिंगेक तांकां दिसतालें तूं मिडिया करतालें, PR कितें करता, PR म्हणजे एक्झॅक्टली कितें, तूं शिकला कितें आनी आतां तूं कितें करता. सो म्हाका तांकां एक्सप्लेन करचें पडटालें की PR इज अ पार्ट ऑफ मिडिया. Okay, it is connected to your journalism, it is connected to your films, it is connected to advertising, it is connected to event management, so it is connected. So हांवें सुद्दां जेन्ना हे फील्ड घेतिल्लें, म्हाका एक्चुअली जर्नलिजम करपाचें आशिल्लें. आय एस्पायर टू बी अ जर्नलिस्ट. जशें तुमी आसा, एक्चुअली आय वॉन्टेड टू बी लायक यू. दॅट वॉज लायक वन ड्रीम दॅट आय हॅड वेन आय वॉज डुईंग माय मास्टर्स. But my destiny took a different way. So though PR was a part of mass communication, but तो एक सब्जेक्ट आशिल्लो जो हांवें चिंतिल्लो की I will not touch. So अशें चिंतिल्लें PR एक बाबा एग्जाम पास करपाक लागून हांव PR करतलें. So my basic focus subject. It is just one subject of mass media. आणि मेन फोकस माझो आसा जर्नलिझम आनी हांव एक जर्नलिस्ट जातलें. So I did my masters also in journalism. I did my post graduation diploma specialization in journalism. But my destiny took a different route. जेन्ना म्हाका एक placement opportunity आयली in a PR firm just at the verge of completing my masters. So this was like 8 years back.
सो 8 years ago I just got a placement opportunity from my college itself की एक PR एजन्सी आसा आनी पुणे आशिल्ल्या तेन्ना, सो तुका जॉब घेवपाक जाय की ना. सो आय गेव अ थॉट लायक की म्हाका कितें करपाक जाय, म्हाका जर्नलिस्ट जावपाक जाय आनी हांव PR कितें करता. बट आय हॅड दॅट थिंग इन मायंड की दिस इज अ वे फॉर मी टू गो टू जर्नलिझम, बिकॉज म्हाका खंय तरी खबर आशिल्लें PR इज कनेक्टेड टू जर्नलिझम. सो हांवें म्हणलें चल 3 महिने काम करता, एकदा एक PR एजन्सी कडेन काम करपाक लागले की आपुणूच म्हजे कॉन्टॅक्ट्स जातले जर्नलिझम, खंय तरी न्यूजपेपर नाल्यार TV चॅनलान हांव कामाक लागतलें. सो आय टूक इट एज एन ऑप्शन टू लर्न जर्नलिझम, टू टेक अप अ जॉब इन जर्नलिझम. दॅट वॉज जस्ट अ टेम्पररी थिंग इन माय मायंड. सो आय टूक अप दॅट जॉब. सो जशें हांवें जॉब स्टार्ट केलो म्हळ्यार हांव खूब शिकपाक लागलें PR बद्दल, जितलें हांव इवन म्हज्या ग्रॅज्युएशनान शिकून नाशिल्लें जितलें हांव शिकपाक लागलें. आनी तशें 3 महिने जाले, 6 महिने जाले, 1 वर्स जालें, 1.5 वर्स जालें, हांव थंयच आशिल्लें त्याच कंपनीन, बिकॉज आय स्टार्टेड लविंग दिस फील्ड सो मच की इवन इफ आय लूक बॅक नाव आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू जर्नलिझम. आय वोंट से इट्स अ बॅड थिंग, बट आय लव्ड बीइंग अ PR प्रोफेशनल सो मच की एक जॉब मागीर दुसरो जॉब, तिसरो जॉब, अशें हांव जॉब घेवन एक्सपिरियन्स म्हजे वाडयत गेलो. तशें करून हाय बिकेम फ्रीलान्सर, कित्याक म्हाका खूब प्रोजेक्ट्स येवपाक लागले फ्युचरान, म्हळ्यार खूब रिक्वायरमेंट्स येवपाक लागली PRची. सो हांव फ्रीलान्सिंग करपाक लागलें, खूब प्रोजेक्ट्स करपाक लागलें. And one fine day, I thought that I should start on my own because the demand for PR started increasing day by day. So that is when, I started my firm, Outdo Media, which is into public relations. आता जसं निकिताने सांगितलं की तू जसं काम करू लागलीस तसं तुला PR बद्दल आवड निर्माण झाली. तुला वेगवेगळ्या गोष्टी ट्राय करायला आवडतात, तू बऱ्याच गोष्टी केलेल्या आहेस, बऱ्याच कामांचा अनुभव घेतलेला आहेस. पण या सगळ्यातून सोशल मीडियामध्ये आपल्याला ह्याच्यासाठी आपण आहोत हे का वाटलं तुला? When, like I said, ki creativity is what I like. I like to be different, not the same thing, doing the same thing again and again. So तभी I realized कि social media management is for me because हर दिन I work with different sectors, by the way. I work with food, I work with fashion, I work with restaurants, I work with event management companies, I work with corporates. तो I get to study. ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ बार बार कर रही हूँ. I get to study about every sector that is there. So that is helping me to understand more and more, learn more and more. ऐसा होना चाहिए कि ना learning stop नहीं होनी चाहिए. You should keep learning and learning. And जब से मैंने start किया as a social media manager, as a social media marketer, तब से I have been learning. And मैं ये भी बोल सकती हूँ कि I am still learning. क्योंकि जो भी fields है, जो भी sectors है, they keep on changing. करेक्ट, आज अलग है, कल अलग है, परसों अलग रहेंगे. तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड दैट इज व्हाई आई फील दिस फील्ड इज फॉर मी. आता एखाद्या बाईसाठी तिचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणं, तो पुढे घेऊन जाणं ही नक्कीच सोपी गोष्ट नाही. कारण घरच्या जबाबदाऱ्या शिवाय जे काम आपण हातात घेतलंय, जे आपलं पॅशन आहे ते पूर्ण करायचं आहे, ह्या दोन्हींमध्ये बॅलन्स करणं खूप डिफिकल्ट असतं. आणि तुम्ही दोघीही स्वतःची फर्म चालवता. मग अशा वेळी या प्रवासात कोणकोणते अडथळे आलेत आतापर्यंत? निकिता, तू काय सांगशील? अडथळे म्हणजे हांवें अशें केन्ना कांयच प्रॉब्लम्स अशें फेस करूं ना. अशे प्रॉब्लम्स आसताच, बिकॉज फर्स्ट आय वॉज अ स्पिन्स्टर, आय वॉज नॉट मॅरीड, आय वॉज अनमॅरीड. मागीर लग्न जातकीर खूब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाडटा. पूण जशें तुमी म्हणलें की तुमचो प्रवास कसो तुमी फुडें व्हेलो, दॅट इज ओन्ली पॉसिबल बिकॉज ऑफ माय प्रवास हूज माय हजबंड, कळ्ळें. सो आय वूड फुल्ली गिव क्रेडीट टू हिम. जशें तुमी म्हणटा की एक बायलेक खूब डिफिकल्ट आसा, पूण तेचो आदार म्हाका स्टार्टींग पासून आशिल्लो, बिकॉज हांवें जेन्ना फर्म स्टार्ट केली ही वॉज ऑलवेज देर बाय माय सायड. सो बोथ ऑफ अस आर इन टू द सेम फील्ड. सो म्हाका अशी डिफिकल्टी अशें येवं ना, बिकॉज आमी दोगांय एकामेकांक सांबाळून घेवपाक लागली. म्हाका जेन्ना म्हाजे PR ओरिएंटेड रिलेटेड कितें प्रॉब्लम्स जाल्ले, देन ही वॉज ऑलवेज देर टू गायड मी, अँड वेन एवर ही निडेड मी, आय वॉज ऑलवेज देर टू गायड हिम. प्रॉब्लम्स इन द सेन्स बॅलन्स लायफ करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. आय लिव इन वास्को, ऑफिस आसा पणजी, सकाळी उठून या
फूल डेज काम करा, मागीर घरा वचा, परत जेवण करा, हाऊस होल्ड पळया, खूब डिफिकल्ट जाता. बट आय ऑलवेज बिलीव इन बॅलन्सिंग. इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथींग यू हॅव टू बॅलन्स आउट. इट इज इम्पॉर्टंट टू बॅलन्स. हांव म्हणचें ना की हे एक काम करया दुसरें काम करया नाका. एज अ वुमन म्हाजी बाकीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सो इट इज ऑल अबाउट बॅलन्सिंग लायफ. अँड इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथींग यू नीड टू गिव युअर 100% डेडिकेशन टू ईच ऑफ दीज पॅरामिटर्स अँड गिव युअर बेस्ट. सो अडखळे येताच प्रत्येक बायलेक. यू हॅव टू जस्ट टॅकल इट अँड लर्न हाऊ टू डील विथ इट. दॅट्स इट. रहमत, तू काय सांगशील? Yes, I agree to the point which he said. Work-life balance is very difficult. जब when you are learning, when you are having an agency, when you are working as a marketing brand promoter for a company, you are doing 3 different things. Plus you have your personal life also. Because this is the time where you enjoy. This is your youth. You want to go for parties. You want to go for celebrations. You want to go, travel and all this stuff. So there are a lot of sacrifices that you have to do. As a student learning and doing the work, sacrifices are very much, a part and parcel of this. दूसरी बात is time management. Okay, manage करना everything together it gets very difficult at times. Since most of my work, जो भी मेरा काम होता है, it's either on laptop, it's or on phone. So बहुत बार ऐसे misunderstanding होता है for parents, for friends that she's ignoring us, she's doing something else, she's chatting or she's video scroll कर रही है, reels watch कर रही है. But they do not understand कि that is my work. I need to update. जो भी है फ़ोन पे होता है. So there are misunderstandings also with your friends, with your families. There are times जब I want to go with my friends but I cannot, meetings schedule होती है. So that is very, problematic. It comes to you need to sacrifice, balance both the things. One more problem or difficulties, I would say challenge that happens is to change the mindset लोगों का. अभी तक लोगों को लगता है कि social media everyone can do. It is right, everyone can do unless you learn it. Correct? Yours is a skill, mine is a skill, hers is a skill. लेकिन वो skill, it depends how much you improve on that skill. What you do with that skill. Correct? So when I go to the clients and I talk to them about social media management, their expectations are next level expectations they have. Secondly is they want quick results, like I already told you about. And value which is there. अभी the current situation is such कि जो भी freelancer है या फिर जो भी agencies है, उनकी value, उनका worth businesses are not really understanding. Now the times have changed, the things have changed. पहले हम क्या करते थे? We used to go, we used to walk, जो भी शॉप दिखा उसमें घुस जाते थे और खरीद लेते थे. But now we see the shop digitally, फिर हम उस शॉप पे जाते हैं. We don't go to search anymore. People's life has become convenient, so their presence on digital media is equally important. So making them understand कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, is a bit challenging at times. आता तुम्ही दोघीही ज्या क्षेत्रात काम करताय तिथे वेळेचं अजिबात बंधन नाही आहे. 24/7 तुम्हाला काम करत राहिलं पाहिजे. मग अशा वेळी फॅमिली फंक्शन्स, तू मगाशी सांगितलंस तुला बऱ्याचदा पालकांना नाही म्हणावं लागलंय फॅमिली फंक्शनसाठी. तुझ्या बाबतीत असं बऱ्याचदा घडलं असेल, पण अशा वेळी समोरून येणारी रिएक्शन आणि तुम्ही कसं हँडल करताय, तू काय सांगशील निकिता? खूप टफ असतं. म्हणजे म्हाका एवरी टायम आय कॅनॉट अफोर्ड टू गो एनीवेअर विदाउट द फोन असपाकूच जाय म्हाज्या कडेन. फोन आनी लॅपटॉप. आय ऑलवेज कॅरी माय लॅपटॉप अँड माय फोन इवन वेन आय गो फॉर फॅमिली फंक्शन्स ऑर अ वेडिंग, बिकॉज यू नेवर नो केन्ना कशें कितें काम येतलें. सो एवरीथिंग इज डिजिटल. आर फील्ड इज व्हेरी डिजिटल. सो आमचे फिजिकल प्रेझन्स मे नॉट बी इम्पॉर्टंट, बट युअर डिजिटल प्रेझन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हांव खंयी वता तेन्ना हांव म्हजो फोन आनी लॅपटॉप कॅरी करता. सिच्युएशन्स अशे येतात की फॅमिली गेट्स डिस्टर्ब्ड, युअर स्टील ऑन द लॅपटॉप, युअर इंस्टेड ऑफ कुकिंग युअर वर्किंग ऑन अ लॅपटॉप. सर्टन डेज कम्स like Sunday is for family time, and instead of me being in the kitchen cooking for my family, I'm busy doing something on the laptop.
So though your family is very supportive, you feel guilty somewhere ki, you know, I'm instead of, you know, I'm always on the phone or my laptop, what would they think about me, you know, work is only important for her, all of that thing. But at the end, it is the client expectations and client fulfillment that is also very important. So as I say, अशा सिच्युएशनान आमकां balance करचेच पडटा, but I make sure that, you know, I keep both the parties happy. So for work life is also important, but your personal life is also very important. So I make sure that I finish all my work and then give time to the family. And जर अडी अडचणी जर कितें काम आयलें, then my phone is always there. रहमत तू काय सांगशील? यस, तो लाइक एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हम लोग कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से लॉग आउट करते ही नहीं, तो 24 घंटा जो होता है वी हैव टू बी देयर ऑन ट्रैक, करेक्ट. एंड लाइक शी सेड, फैमिली बैलेंस करना, फ्रेंड्स बैलेंस करना, वर्क बैलेंस करना एंड कॉलेज बैलेंस करना बिकम्स अ रियली बिग टास्क. पीपल, यू नो, फैंसी किया जाता है, यू नो, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर. They don't know the struggle which comes with being an entrepreneur, correct? 9 to 5 job, you do it, you leave and you are relaxed for the rest of the day. But when it comes to entrepreneur, you have 24 घंटे आपके दिमाग में चल रहा होता है, अब क्या करें, नेक्स्ट क्या है, कल क्या करना है, परसों क्या था, आज क्या है. यू नो, यू हैव टू बी वेरी क्विक, यू हैव टू बी अप टू डेट. तो अप टू डेट रहना, मैनेज करना बिकम्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो. एंड लाइक यू सेड कि फैमिलीज़ के साथ यू डोंट गेट टाइम टू स्पेंड. तो there is a time, like, you know, what I do is I make sure that 1 घंटा in a day I keep my phone aside, थोड़ा digital detox हो. I sit with my family, I sit with the cats that I have, I look at them and it feels really good, you know. But abhi, if the struggle is not now, you will not bear the fruits in the future. And since I am in that stage jahan pe I have to be on track, I need to, you know, stay in touch with the clients, it you can say I have made my life my job, you know. It's the responsibility. At the end, I am responsible for their digital platforms and मेरी ड्यूटी होती है कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँ. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर ऑल द फन. तर आता तुम्ही ज्या फील्डमध्ये काम करतायत ते युनिक आहे हे आपण तुमच्याकडून ऐकलंच. तर या फील्डमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी तुम्ही काय सांगाल? निकिता, तू काय सांगशील? ओके, मी एक टीचर पण आहे, मी आधी बोलली नाही आहे, बट आय एम ऑल्सो अ प्रोफेसर टीचिंग मास कम्युनिकेशन स्टुडंट्स. So I you know, impart knowledge every year to around 100 students. Okay, so my message to them and all the aspiring youths will always be: work hard, never look back, and work on your skills. Never ever be lazy. You know, if you go to see, people are getting lazy day by day, but if you want to get lazy, it's not going to take you anywhere. So the key factors that you need is work really hard, inculcate those skills, try learning new things every day, and have that confidence and that zeal that you want to reach somewhere. I always had that, you know, that dream to be an entrepreneur, and I worked towards it to fulfill my dream. So my message to everybody is: work hard and always keep a dream, always keep a focus, and nothing can stop you from doing it. Yes. रहमत, तू काय सांगशील? Yes. One of the main advice जो मैंने खुद follow की है, and I would love if, you know, the generation who wants to get into social media management is to try. Like I already mentioned कि लोग try नहीं करते, you know, they think कि oh this I have never done this, मैं नहीं करूँगा, you know, या फिर नहीं करूँगी. Trying is very very important, and it is not necessary कि आप आज ही decide करो आपको future में क्या बनना है. You should try everything that is there in your life. You never know, आपको swim पसंद आ जाए, आपको cricket पसंद आ जाए, you know, कोई भी singer जो है, या फिर, you know, any person जो भी, like a millionaire, billionaire, a person who has a brand, who has a name, वो एक दिन के decision से नहीं हुआ है. You know, there is a lot of trial and error जो होता है. So trial and error, when you are young, trial and error becomes a part of your life, and I feel starting early is very important. You know, I have seen मेरे age के people,
they don't know what they're going to do next year. You know, they don't know what they're going to do in 4-5 years of time. But they don't want to try anything now also. So they are waiting कि कब opportunity पैर के पास आके बैठेगी और मैं उसको ले लूँगा. But that doesn't happen. You have to run behind it. Like she said, you have to work hard. You have to work hard with anything that excites you. Or you have to always go for something that you love. You know, boring job करके, you know, you will earn money, but you will not earn the time. You will not enjoy your life. Basically we all are here to enjoy life, right? So आप ऐसा कुछ करो जिससे you enjoy, you love, no matter society against हो, आपके family against हो, आपके friends against हो, but what you love is what you love, and you will take a lot of memories along with it. So this is what I would like to tell, and they should keep on exploring new things, and अभी ही नहीं, when they grow up also, when they grow old also, it's never too late to start anything. तर रहमत आणि निकिता, तुम्ही तुमच्याशी बोलून, तुमच्याशी गप्पा मारून तुम्ही किती बिझी असता याचा एक अंदाज आम्हाला आलेला आहे. आणि त्या बिझी शेड्यूलमधून तुम्ही वेळात वेळ काढून गोवन वार्ता लाईव्हच्या स्टुडिओमध्ये आलात. तुमचा एवढा छान प्रवास आमच्याशी शेअर केलात त्यासाठी खूप खूप थँक्यू. आणि भविष्यातील तुमच्या प्रवासासाठी गोवन वार्ता लाईव्हकडून तुम्हाला अनेक शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तर ही होती निकिता आणि रहमत. पुन्हा भेटू नव्या कर्तृत्ववान स्त्रीसह. तोवर तुम्ही पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह. नातं गोव्याचं, तेणं मराठीचं. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत बेन्स होम स्टुडिओ, अ कम्प्लीट सोल्युशन फॉर युअर फर्निशिंग नीड्स.